Good morning, dear students. Today is 19th October 2020, and I have called you to take the class of Population Studies, second paper. And today I will deal with Herbert Spencer theory. Dear students, Herbert Spencer theory is known as biological theory also. And he was English philosopher and biologist, propounded the theory in his book The Principles of Biology, and he argued that fecundity decreases when the complexity of life increases. And this is the very important terminology he used, the complexity of life. And I have already told you the demographic transition model, that as we move to the industrial society, as we move to the urbanization era, the life complex. There is a scenario of life complexity. And that exactly what Spencer used to say, that fecundity decreases when the complexity of life increases. And also he said that changes in the growth of population occur due to natural change in reproductive capacity of human beings. And dear students, therefore his theory, that means Spencer theory, is also known as natural theory of population. So anybody could ask you what is biological theory or what is natural theory of population, easily you can trace that this is a theory of Spencer's. Okay. And so let us talk about the major components of theory. So students, there exists antagonism between individualization, that means survival, and genesis, that means reproduction. So Spencer coined two terms: individuation, that means every individual should think of their survival, and genesis, that is a biological term that emphasizes on the reproduction process. So when any individual does hard work for his personal development at his workplace, the desire for reproduction decreases. So this is a very important link you can make to deal with this theory. And this can be also correlate in this COVID era, dear students. So more energy for self-development results, less energy left for reproduction, which decreases the population growth. So what a beautiful narration of Spencer. And this is also, this could also, and this should also followed by any government in this modern society where there is no development taking place. That is more energy for self-development results, less energy less for reproduction, which decrease the population growth. So if you want to reduce your population, you have to give everybody job. You have to make everybody skilled. You have to provide everybody opportunity for work, so that they may concentrate their stamina and energy into that work, and hence the population growth will reduce. Okay. So there was observation of Spencer. He observed that fertility is more in rural individuals whose life is not complex. So dear students, you can also correlate and see this thing in India also. In rural India, there is a not complex livelihood, hence there is no complexity in life, and so there is a more fertility. And whereas fertility is low in an industrial society where life is more complex, the pressure of education is more and brains are overtaxing. In those societies, population decreases. So this is a very beautiful narration of Spencer, and that opened the door for the development. And hence we are studying this topic in this paper. And the basic argument of Spencer was that terminology was social statics. And he said that human happiness can be achieved only when individuals can satisfy their needs and desire
desires without infringing on the rights of others to do the same. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रिय विद्यार्थियों, कि जो स्पेंसर ने बायोलॉजिकल थ्योरी को नेचुरल थ्योरी के रूप में तब्दील किया लेकिन विकास के साथ जोड़ा, वो कहता है कि मनुष्य का जो खुशी है, आनंद है, वो तभी अचीव होगा जब उसके निजी स्वतंत्रता उसको मिलेगी, उसके निजी नीड पूरे होंगे, वो अपने को सेटिस्फाइड करेगा और अपने बेसिक नीड्स के साथ साथ अपने डिजायर्स को भी फुलफिल करेगा। लेकिन शर्त क्या है? विदाउट इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स टू डू द सेम। शर्त यह है कि दूसरे का नुकसान किए बगैर, दूसरे के अधिकार का हनन किए बगैर। इसका मतलब ये इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल का सबसे पहली बात स्पेंसर ने कह डाली थी कि इंक्लूसिव ग्रोथ तभी हो सकता है जब आप सभी को लेके साथ चलेंगे। इसलिए सबका साथ सबका विकास जो टर्मोलॉजी है, एक्चुअली स्पेंसर ने बहुत पहले इसको कह दिया था। सो यू हैव टू डील विथ ऑल दिस विद द मॉडर्न नरेशन आल्सो। सो ही आल्सो टोल्ड अबाउट द मेटलिज्म एंड इट सेड that the average opinion in every age and country is a function of social structure in that age and country. And then he said that each member of the race, here he used race because he belongs to English community, but we can use it in the caste system also. So each member of the race or caste or religion or creed must not only be endowed with faculties enabling him to receive the highest enjoyment in the act of living, but must be so constituted that he may obtain full satisfaction for every desire, without diminishing the power of the others to obtain like satisfaction, and nay, to fulfill the purpose perfectly, must desire pleasure from seeing pleasure in others. So this was exact words of Spencer which he wrote in his book. Okay, so dear students, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसमें कहा गया है कि चाहे कोई कास्ट, क्रीड या रेस हो, उसको एनेबल करना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसको अवसर देना चाहिए ताकि अपने विकास के बारे में स्वयं सतर्क हो और तब वो दूसरे का हक छीने बगैर इस दुनिया को प्लेजेंट बना दे। तो प्रेजेंट इकोनॉमी अगर बनानी है तो स्पेंसर की इस थ्योरीज को हूबहू आज के संदर्भ में आपको जोड़ना होगा। यू हैव टू लिंक स्पेंसर थ्योरी विद दिस मॉडर्न फिनोमिना। अब आपने देखा है कि भारत जैसे देश में अभी भी गरीबी है, तो अगर गरीबों को ऐसी योजना जो उनको सशक्त करती है, फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वला योजना, तो ऐसे योजनाओं से बहुत बड़े समाज का एक हिस्सा एम्पावर्ड होता है और तब वो विकास के साथ जुड़ते हैं और तब जनसंख्या गिरती है किसी पर्टिकुलर कंट्री में। सो डियर स्टूडेंट्स, द डेवलपमेंट हाइपोथेसिस ऑफ द स्पेंसर कैन बी नरेटेड एज दैट ही in 1852, 7 years prior to Darwin's Origin of Species, expounded and advocated a theory of evolution. And Spencer, almost a decade before Darwin published on the Origin of Species, Spencer coined the beautiful phrase that is survival of the fittest. And this is a very good words he coined, survival of the fittest, for the sake of development, that अगर आप आज के संदर्भ में या किसी भी समाज के विकास के संदर्भ में अगर आप इक्विप्ड नहीं होंगे, अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे, अगर आप एडाप्टेशन के योग्य नहीं होंगे, अगर आप हेल्दी नहीं होंगे, अगर आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं, तो आप उस बदलते हुए समाज में या बदलते अर्थव्यवस्था में फिट नहीं हो पाएंगे और आप किनारे हो जाएंगे और आप प्रभावित हो जाएंगे और आप गरीब बने रहेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो टर्मिनोलॉजी था, एक्चुअली वो इसलिए था कि आप अपने को विकास के साथ जोड़िए। तो गवर्नमेंट के लिए और इंडिविजुअल के लिए भी मैसेज स्पेंसर ने दिया था कि इफ यू हैव टू फिट, यू हैव टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, इफ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमी, यू हैव टू फिट अकॉर्डिंग टू दैट इकोनॉमी। जैसे आज के दौर में रोजगार के अवसर इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि रोजगार के प्रारूप बदल गए हैं। कई ऐसे रोजगार आ गए हैं कोविड-19 के बाद जो कि जिसके बारे में लोग सुने नहीं थे। अगर आप उस रोजगार के योग्य अपने को नहीं बनाएंगे तो आप फिर आने वाले समय में
रोजगार को पा नहीं पाएंगे, बेरोजगार बने रहेंगे। गवर्नमेंट पर प्रेशर होने के बाद भी कुछ नहीं होगा अगर आप स्किल्ड नहीं होंगे, अगर आप डिजिटल इकोनॉमी के साथ नहीं जुड़ेंगे, अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं होंगे, अगर आप एंटरप्रेन्योर स्किल की ओर अपने आप को नहीं बढ़ाएंगे तो आप फिट नहीं हो पाएंगे। तो जो स्पेंसर ने कहा था that is also relevant in modern era. So dear students, Spencer had made the connection between biology and sociology, and here in sociology we also coined economics also. And Spencer argued that the evolution of human societies, far from being different from other evolutionary phenomena, is but a special case of universally applicable natural law. And sociology or economist can become a science when it is based on the idea of belief in social order, not conforming to natural law survivors. So this is a very natural theory of Spencer which we have to think about. And when we talk about the evolution, Spencer's first and foremost concern was with evolutionary changes in the social structures. Evolution was the universal process which explains both the earliest change which the inverse and large is supposed to have undergone, and those latest change which we trace in society and the products of social life. Increase in size, Spencer maintains, brings in their vague differentiation in structure, that is coined as a great division of labor. And if hunting and gathering societies were suddenly to grow in population into the thousand, only major modifications in the structure would allow them to continue being viable society. और याद कीजिए हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में यही कहा था कि अगर फर्स्ट स्टेज में हंटिंग सोसाइटी, गैदरिंग सोसाइटी है, अल्प विकसित समाज है, कोई विकास नहीं हुआ, और समाज वहां पर अगर टाबू में बंधा हुआ है तो थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए, थोड़ा एजुकेशन को एक्सप्लोर कर दीजिए, थोड़ा स्किल इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी की ओर बढ़िएगा तो अपने आप क्या होगा, वाइबल सोसाइटी हो जाएगी, अपने आप डेवलप्ड सोसाइटी हो जाएगी और जनसंख्या संतुलित हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक terminology and basic explanation of the Spencer theory of population. Dear students, I have narrated for you, and I have already delivered this lecture online in online classes, and this lecture I will load in YouTube college YouTube channel for you and for further exploration of the topic. Thank you. Take care. Do well.